Joining me on India First is Anila Singh, representing the BJP. Amit Jamai is the spokesperson of the Samajwadi Party. And Dr. Vikram Singh is former Director General of the Uttar Pradesh Police for a legal and holistic perspective on this big story. But Amit Jamai, I want to ask you, Akhilesh Yadav raises questions about anarchy and lawlessness in Uttar Pradesh. Yogi Adityanatah refers to this picture of Akhilesh Yadav shaking hands with Sadakat Khan, a main and now absconding conspirator, sir. गौरव जी, सदन में जब माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछा कि कानपुर देहात में एक मां और बेटी को, एक ब्राह्मण मां और बेटी को जिंदा जला दिया गया, शासन प्रशासन के सामने जला दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन सदन में उनको बोलना था, अमेठी में एक प्रधान बाप और बेटे की हत्या हो गई। जौनपुर में एक वीडियो जर्नलिस्ट जो जिले के ब्यूरो चीफ हैं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चली और जो गोली चलाने वाले थे वो जिला अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके परिवार के हैं। तो जो लॉ एंड ऑर्डर का उत्तर प्रदेश में जो सिचुएशन है, हर 2 घंटे में एक मर्डर गौरव जी उत्तर प्रदेश में होता है, हर 3 घंटे में एक बेटी का रेप उत्तर प्रदेश में होता है, दहेज हत्या में हर 1 घंटे में एक बेटी जान हमारे उत्तर प्रदेश में जाती है। सब संवेदनशील मुद्दे हैं, बात जरूर होनी चाहिए। मेरा आज का प्रश्न बहुत सीधा और बहुत स्पष्ट था। आज जो खबर इंडिया टुडे पर, जिस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, वो अखिलेश यादव जी की तस्वीरें एक सदाकत खान नाम के व्यक्ति के साथ है, जिसका पुलिस का कहना है वो इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। फेयर इनफ सर, आपका अधिकार है जवाब ना देना। मैं बस ये बताना चाहता हूं, मेरा आपसे प्रश्न क्या था, आपका उत्तर क्या था। Anila Singh, the question on this particular issue is due process of law being followed, or are bulldozers being used by the Yogi Adityanath government as tools of intimidation? Khalid Zafar's house has been demolished without any court pronouncing him guilty, ma'am. My ram to everyone. Definitely, the demolition which we observed in today is under the all legalities. Why? Because Prayagraj Development Authority had sent so many notices to the owner that this particular house is not according to the map which was being submitted to the authority. So it is illegal. So kindly sort it out. But they never gave any heed to it. So ultimately, Prayagraj Development Authority had to take action. And if we talk about the demolition, if we talk about the bulldozer being used in demolition, more than 4,000 crores of properties of these land mafias, dons, and the criminals who had done heinous crimes, their properties are being demolished. So what do you want to say? That if we demolish anything, it is just because they are the criminal and it is some sort of a way to teach them lesson. Yes, we can teach them lesson by other verticals as well. Well, and that's the question that's been raised, but let me take this to Dr. Vikram Singh. Let me take this to Dr. Vikram Singh. Dr. Vikram Singh, is due process of law being followed, or is this, as some argue, a way to instill fear in the minds of the mafia? And as Amit Jamai asks, are bulldozers being used selectively only against minorities? Gaurav ji, good evening. Nothing would be farther from truth. And do you think for a moment that the police and the entire administration would climb up a tree at the behest of any political illegal orders? The bulldozers are not a part of any criminal jurisprudence, but the Urban Development Act, Section 27, 28, 28A, demolitions happen in that. Due notices were given to most of them, and they chose not to respond to those notices. And the Prayagraj Development Authority then requisitioned the police and the administration, and the demolition happened. First, little knowledge is a dangerous thing. First, do your homework, come prepared with the legal facts, and then say that the police is nowhere in the picture. It is the question, the Prayagraj Development Authority requisitioned them, used the bulldozer to demolish illegitimate, improperly constructed houses, which they did not choose to respond to the Prayagraj Development Authority. Then you mentioned encounters. Encounters also happen within the ambit of law, Section 96 to Section 104 of the Indian Penal Code, in the right of private defense.
हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के, use of minimum force when there is an encounter to safeguard oneself or anybody else his life and property. Minimum force. What is the illegality in this? And rest assured, I have implicit faith in my judiciary, and if there is a small misdemeanor on the part of the police or the administration, okay, our friends in the politics and the administration will not spare us. Fair enough. Amit Jamai, respond to that picture. मैं एक बार फिर आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं, सदाकत खान की अखिलेश यादव के साथ तस्वीर। वो एक मर्डर केस में, बहुत ही संगीन मर्डर केस में मुख्य आरोपी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया की तस्वीर। क्या आप उस पर उत्तर देना चाहते हैं? गौरव जी, मैं एक तस्वीर आपकी जानकारी के लिए, विक्रम जी की जानकारी के लिए, अनिला जी की जानकारी के लिए, ये एक तस्वीर है आज जिनका मकान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गिराया है। ये है ये जो मिस्टर खालिद हैं, ये भी वीडियो जर्नलिस्ट हैं, और इनके गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी में अनुराग ठाकुर जी सफर कर रहे हैं। सोचिए कितना गहरा रिश्ता होगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का माइनॉरिटी सेल है, सदाकत उनका सगा भाई है माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष का। हमारा ये कहना है कि वो चुनाव में आया हो सकता है, आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ मिलने लोग आते हैं, लेकिन जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, 17 के बाद उनकी सैकड़ों तस्वीरें, गौरव जी सोशल मीडिया में, मैं जानता हूं आपकी मजबूरी होगी, आप नहीं दिखा पाएंगे। नहीं, हम क्यों नहीं दिखा पाएंगे? आप दिखा रहे हैं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। आप अपनी मजबूरी का जिक्र कीजिए, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अमित जमाई, आपकी जो मजबूरी हो कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने से बचे, आपने तस्वीर दिखाई है, उस पर अनिला जी उत्तर देंगी, लेकिन आप अपनी मजबूरी बताइए कि आप अखिलेश यादव के साथ तस्वीर पर क्यों कन्नी काट रहे हैं। आप मेरी मजबूरी छोड़िए, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं मुझे जो कहना होता है अमित जमाई, और ये आप समझ लीजिए, ये आप समझ लीजिए। आपने प्रश्न पूछा है, अनिला सिंह उत्तर दीजिए अगर आप देना चाहें। मैंने अमित जमाई को भी यही कहा था, ये तस्वीर आप उत्तर देना चाहें दीजिए। अनिला सिंह जी, आपको उत्तर देना है, आप उत्तर दीजिए। One thing is very clear. If somebody meets the party president of any of the political party, first of all, it is being inquired why that person wants to meet and who that person is. तो अखिलेश यादव जी को पता नहीं हो कि ये कौन है, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अखिलेश यादव जी very well knew that who this particular person is, but he knows that he could be used in the upcoming elections. So that is why he keeps on entertaining the legacy of Samajwadi Party to keep on harboring. लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं अक्यूज। नहीं, इन्होंने दिखाया नहीं, देखिए अगर कोई पूर्व विधायक के साथ ही फोटो दिखाते, वो तो पूर्व है ना। आपके अध्यक्ष तो वर्तमान में बैठे हुए हैं, आपके अध्यक्ष के साथ फोटो क्यों आ रही है? और ये एनआई जर्नलिस्ट के साथ फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, whether the person is ANI journalist or whether that person is Anila Singh or Gaurav or Vikram Singh, if we have done anything wrong, then action will be taken. Fair enough, you are saying action will be taken. Dr. Vikram Singh, you've been a police officer. Accordingly नहीं बनाया हुआ है, authority is not going to take any action against you. And let me tell देखिए, you हम तो एक पत्रकार के तौर पर किसी भी नेता के साथ अगर क्रिमिनल की तस्वीर होगी तो हम जरूर पूछेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसके साथ वो तस्वीर हो। लेकिन अगर उत्तर ये मिले, अरे उसके साथ भी है, उसके साथ भी है, उसके साथ भी है, क्या ये उचित जवाब है? ये उन नेताओं को और प्रवक्ताओं को सोचने की आवश्यकता है। हम डंके की चोट पर प्रश्न पूछते हैं। बट आई वांट टू ब्रिंग इन डॉक्टर विक्रम सिंह बिकॉज sir, time is at a premium. Dr. Vikram Singh, you've been a police officer for over 4 decades. In your appreciation, is due process of law being followed? Because as far as criminal jurisprudence is concerned, CRPC is concerned, IPC is concerned, sir, 1, where is the bulldozer mentioned? 2, will this instill fear in the minds of the mafia? Like Atiq Ahmed says, he's scared, he doesn't want to come back to Uttar Pradesh. CRPC is not a part of criminal jurisprudence. It is a part of the Urban Development Act section 2728 and is used to demolish on the requisition of the parent organization, whether it is the Development Authority, Railways, Forest, whose land has been encroached, or wherever there is an illegal construction. Number 2, it is bound to have a salutary impact because it hits at the root and the finances of the mafia, and therefore the crime syndicate fears, and it is a force multiplier and boosts the confidence and the morale of the people. Of course, Atiq has a lot to fear and a lot to answer. Under these circumstances,
it's not going to be rosy and a smooth ride for Atiq and his gang in times to come. Okay, last 30 seconds before I go to the other big story. Dr. Vikram Singh, in your appreciation, photographs of accused with a political leader, does that signify anything, or is that only used to instill fear in the minds of either the masses or law enforcers? Mutual benefit. And my advice to every political person would be take pains to distance yourself from anti-social and criminal elements. If I were you, I would have a cyclo-style format that I have never been to jail and I am not figured in the history sheet of any politician, and only after signing that paper should the political person be ready to take a selfie with that person, otherwise not. Fair enough. To my guests, many thanks for joining me.